Hello everyone. Today we are going to talk about osteoarthritis of a knee. Osteoarthritis of knee is a degenerative condition. It generally is seen in patients who are above 50 or 60 years of age. But nowadays it has become a common condition in people around 40s also. So basically what is degenerative condition of knee? So with due course of time, our two bones, the thigh bone and the leg bone, tend to rub with each other, and we all have a menisci. It's like a shock absorber in between the knee which tend to take all the pressure of this movement. But with age, this shock absorber or menisci loses its suppleness, loses its basic activity, basic function. So what is happening is these two bones are rubbing with each other, and while it is rubbing with each other with lots of stress, there are tiny minute micro fractures happening on these surfaces of these two bones. These two bones will get this tiny micro fractures. Now, as we all know, it's the tendency of our body to heal. So these micro fractures are healing, but the healing that is happening is not happening in a smooth procedure. They are small, so like it will not grow back in the smooth original surface. The articulating surface will not be so smooth, and it will have small bony prominations coming out. These prominations are known as osteophytes, and these are the osteophytes which tend to rub or which tend to cause the pain too much, or they try to erode this menisci more, and they try to erode the muscles surrounding the knee joint, thus leading to a very painful and swollen knee. Okay, so today we'll be dealing with basic set of exercises that you can do at home which will help you to, if you are not having this problem right now, these will help you not to end up in this OA arthritis, or if you already have this condition, this will make sure, these set of exercises will make sure that it does not degenerate more, it does not progress more, and you are able to maintain it right there and prevent you from ending up in a further painful condition. Okay, so we'll teach you the exercises right now. Okay, so the first set of exercises we'll be dealing with the tight structures around our knee. हम basically ये try करने की कोशिश करें कि जो हमारे muscles tight हैं और जिसकी वजह से हमारा पाँव पूरा नीचे, हमारा घुटना पूरा फ्लोर को टच नहीं कर रहा है, हम पूरा पाँव सीधा नहीं कर पा रहे, हम उन्हें relax करेंगे. Okay, so first exercise being, you can take any towel, bed sheet, dupatta, anything, put it around your toes. The patient should hold it, okay, and lift the leg. पाँव उठाना है. Make sure that your knee is not bending. It should be in locked position. पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा. आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए and hold this position for 10 seconds. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go down. Repeat the exercise 3 times on one leg and 3 times on the other leg. Again, same thing that I would emphasize in all the videos, that whatever exercise you're going to do, you have to do it on both the sides. Always do the exercises or the stretches on both the sides. हमेशा दोनों तरफ को involve करके करेंगे. ठीक है? So the first exercise is that you have to lift up your knee, lift up your leg, keep your knee straight, hold in this position for 10 seconds, come down. Second one is that you have to do the same action, lift it up, but make sure now you go out as much as possible. So you will get a stretch in the middle or the inner side of your thighs. Thighs की अंदर की तरफ आपको ये stretch महसूस होगा. Hold it for 10 seconds, come back to the neutral position and down. Okay, same, repeat the exercise on the other leg as well. The third stretch being, pick it up, good. Knee again locked. Now cross over. You have to cross it on the other side. Hold it there. Now you will feel the stretch on the outer side of the thigh. Hold it there for 10 seconds. Come back to the neutral position and down. 3 stretches, 3 times, 10 second hold on both the sides. Okay. Now we are going to start with the basic exercises. All of these exercises are very easy. You can do at your home, and it is helpful for all those people who are not very mobile and are not very flexible. All those people also can do this. Elderly people especially. So what you and minimum equipment is required. What you need is a towel roll. Towel को ऐसे roll बनाएंगे. Put it under your knee. Okay. And now only thing that you have to do is press it down.
अपने नी को एकदम स्टिफ करके कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे प्रेस करना है। होल्ड करिए 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। सो आपको महसूस होगा कि आप इस वाली मसल को, यू आर बेसिकली रिक्रूटिंग दिस मसल एंड मेकिंग इट टाइट। दिस मसल इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कीपिंग योर नी स्ट्रेट। क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं इस मसल को, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मसल है नी के इन्वॉल्वमेंट में। सो यू आर रिक्रूटिंग दिस, यू आर एंगेजिंग दिस, स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस मसल की। हम ये कर रहे हैं 3 टाइम्स, रिलैक्स। This is the first exercise. Now what we have to do is place the same towel roll under your ankle. Okay? Next, start, loosen up. Start your knee with slight bending. Okay? And from slight bending, you have to engage it and press it down. इसको पंजे को पास में लाएंगे, press it down. Hold it again for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. अगेन बेंड योर नी स्लाइटली, इसको इसमें से लेके जाते हुए सीधे लेके जाएंगे, पंजे को पास में लाके प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अगेन आप ये जो भी एक्सरसाइज, अब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बात करने वाले हैं, सब आप 5 दफ़ा 10-10 सेकेंड के होल्ड के हिसाब से करेंगे, और वही दोनों पैरों में ऐसे ही चलेगा। ठीक है। सो द थर्ड एक्सरसाइज इज अ वेरी सिंपल वन. What you have to do is you have to lift your leg up. Okay, just till 40 to 50 degrees. Make sure that you engaged your ankle also. Keep it here for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. Okay, this is also known as straight leg raising. आप इसको दोबारा ट्राई करिए एक बार, पंजे को पास में लाइए, जस्ट 40 to 50 डिग्री, बहुत ऊपर नहीं लेके जाना है, थोड़े से एंगल पे मेंटेन करके रखना है। डाउन. नाउ इन द सेम एक्सरसाइज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, द सेकेंड वर्जन इज दैट वी आर ट्राइंग टू रिक्रूट द मसल विच इज ऑन द इनसाइड. उसके लिए कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सेम एक्शन करेंगे. उठाइए, एंकल को एंगेज करिए, बट नाउ जस्ट टर्न योर लेग लिटिल आउटसाइड, थोड़ा बाहर की तरफ मोड़ देना है. होल्ड इट देयर 10 सेकेंड्स, कम बैक, go down. ठीक है. This is again a very simple one to do. Repeat the exercise. Take it outside, hold it there, make sure it's not very high, 40 to 50 degree, and then keep your knee straight. बस हो जाएगा. Come back, come down. अब what exercise what we are trying to do is that we have to engage the muscle which is very much required in taking your knee from the bent position to straight. Okay, so आप अपने घर में pillows का use कर सकते हैं. It's very easy to do. Lift your legs please, both the legs. Instead of this, you can put 3 or 4 pillows. Just make sure that your legs are hanging down on this position. Now from this position, lift your leg up. One leg up, थोड़ा सा ही. Hold it there, engage your ankle. Hold it for 5 seconds, 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Do it on the other leg as well. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. ठीक है. आप इसकी जगह पिलोज यूज कर सकते हैं. 5-6 पिलोज लगा लीजिए एक के ऊपर एक, और फिर ये काम करिएगा. फिर से करके दिखाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें वही, आप अपना पिलो लेके जस्ट पुट इट बिटवीन योर लेग्स, ओपन अप. हाँ, अब आपको 1 या 2 पिलो ले लीजिए. मेरे पास बड़ी बॉल है, मैंने इसका यूज किया है. यू कैन ऑलवेज यूज 2 पिलोज. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रेस इट इनसाइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिक्रूट द अडक्टर्स. हम अंदर थाइस के इनर साइड वाली मसल्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं. फिर से करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अब अगेन हेयर यू कैन यूज 5-6 pillows. Make sure that your knees are in 90-90 position, straight and straight. कुछ भी नहीं करना है, एंकल को स्ट्रेट रखना है and just press it down.
Here what you're doing is you're recruiting your hamstring. You are trying to strengthen them. Press करेंगे, 10 seconds hold and relax. 5 repetitions. इसमें दोनों के आप both the legs are doing, you're doing simultaneously, so no worries. Together you can do that. Hold for 10 seconds and relax. That's it. These are the exercises that you have to do with pillows. Okay. Now please sit. So now what you have to do is the lower leg you will keep it bent. नीचे वाले पाँव को मोड़ के रखिए, नीचे वाले पाँव को मोड़ के रखिए. Upper leg should be straight and you have to lift it up. जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो नी एकदम लॉक पोजीशन में रहेगा, स्ट्रेट रहेगा. एंकल को एंगेज करिए. नाउ लिफ्ट इट अप. होल्ड इट हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. Okay. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. बस आपको इतना ध्यान रखना है that patient is in straight alignment and he is not rolling backwards or forwards. Okay. Now please sit. Okay. So the patient has to sit in high sitting position. High sitting means when the legs are hanging down and floor is not contact with the feet. What you have to do is take support. Keep your hands by the side of the bed. Lift your knee up. Hold it there for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down. Same, do it on the other leg as well. यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों पैरों में साथ में, मतलब दोनों पैरों में बारी बारी से करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दर्द वाले पैर या दर्द वाले घुटने में हो. ठीक है. दिस वॉज वन एक्सरसाइज. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दैट यू हैव टू लिफ्ट अप योर लेग अप. Hold it there for 10 seconds. Always engage your ankle as well. Hold it for 10 seconds and down. जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मेक श्योर दैट योर बॉडी इज स्ट्रेट. आप पीछे लीन बैक नहीं कर रहे क्योंकि आप वो दूसरी मसल को रिक्रूट कर लेंगे. रेक्टस फ्यूमरस इन्वॉल्व हो जाएगी. वो नहीं चाहिए हमें बस चाहिए कि हम ये थाई की मसल को एक्टिवेट करें. तो उसके लिए बॉडी स्ट्रेट, सपोर्ट ले लीजिए, लेग अप, होल्ड इट देयर फॉर 10 seconds and come down. That's it. So the last set being that you have to ask the patient to stand up. Please make sure that you are standing in front of the patient or the patient is standing in front of a table or a wall so that he can take support. So mostly because we have this problem in elderly patient, hold the hand of the patient. What you have to ask them कि आप अपने एक पाँव को उठा के पीछे फोल्ड करेंगे. Come back. इसमें होल्डिंग नहीं है, repetitions है. So do it on both the sides. 1, come down, 2, ऐसे ही 10 times दोनों पैरों में होने चाहिए, यानी टोटल काउंट ऑफ 20. बस ये ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को वेल सपोर्टेड हैं क्योंकि बैलेंस की प्रॉब्लम होती है एल्डरली में. तो आप पकड़ लीजिए या वॉल वगैरह का कुछ सपोर्ट दे सकते हैं. पेशेंट हैज़ टू टेक गुड सपोर्ट एंड देन परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस. कम ऑन, डू इट वंस मोर. 1 2 3 and once more 4. Okay, so these are the basic set of exercises that you can perform and this will help you not only to maintain the strength of your leg and also avoid going for surgeries and all. हम at least if not avoid, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के लिए पुश कर सकते हैं. कि ज़्यादातर लोगों को ये बोला जाता है कि नी ऑपरेशन कर लीजिए, रिप्लेसमेंट कर लीजिए. उसे वी कैन पुश इट टू मैक्सिमम and you can maintain a healthy lifestyle with these things. Thank you.